Hello, my dear students. I hope you all are doing well. Today, we are going to start with the topic atmospheric refraction. They are saying that we have observed the apparent random wavering of flickerings of objects seen through a turbulent stream of the hot air rising above the fire on the radiator. ये जनरली हम देखते हैं जब घर में हवन हो रहा होता है, पूजा हो रही होती है, या फिर किसी वजह से कोई रेडिएटर जनरेटर हो या जिससे बहुत ज्यादा हीट निकल रही हो, तो उसके आसपास या फिर जब हम मार्केट में जाते हैं तो जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं या फिर जो स्ट्रीट फूड जो बनाते हैं उनकी जो स्टोव होती है उसके पास आप देखोगे एक वेवरिंग हमको दिख रही होती है, राइट? समवट लाइक दिस, है ना? एक टर्बुलेंस हमको दिख रहा है, एक डिस्टर्बेंस हमको दिख रहा है अराउंड दिस हीट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हॉट एयर प्रेजेंट है। कोल्ड एयर और हॉट एयर में वी नो दैट देयर इज अ डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज, राइट? सो the air just above the fire becomes hotter than the air further up. The hotter air is lighter, that means it is less denser than the cooler air above it. जो hotter air है, ऐसा क्यों? क्योंकि hotter air में higher temperature present है, higher temperature होगा तो molecules के पास ज्यादा energy है, right? So molecules will be little farther, है ना? मॉलिक्यूल इधर उधर घूम रहे होंगे, बहुत ज्यादा रैंडम मूवमेंट्स होंगे बिकॉज उनके पास एक हीट एनर्जी आ चुकी है, तो काइनेटिक मूवमेंट होगा, वो इधर उधर घूमेंगे, तो अपना इंटर पार्टिकल डिस्टेंस उनका और ज्यादा बढ़ गया होगा, जिसकी वजह से डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी, आर डेंसिटी विल डिक्रीज, ठीक है? एंड बिकॉज ऑफ दैट द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स स्लाइटली लेस देन द कूलर एयर. Since the physical condition of the refracting medium air is not stationary, the apparent position of the objects are seen through the hot air fluctuates, क्योंकि air भी fluctuate कर रही है. जब हम glasses में देखते हैं तो वहां पर yes of course density में difference होता है, refractive index में distance होता है, लेकिन ये जो हमारा बॉक्स है, ग्लास स्लैब है, वो इधर उधर मूव नहीं कर रहा, बट सिंस एयर जो है हॉट एयर इट इज मूविंग, तो जो ऑब्जेक्ट्स है वो भी वेवरिंग दिखा रहे होते हैं, फ्लिकरिंग दिखा रहे होते हैं. The apparent position of the objects as seen through the hot air fluctuates. This wavering is thus an effect of atmospheric refraction or refraction of light by Earth's atmosphere on a small scale in our local environment. The twinkling of stars is a similar phenomena on the much larger scale. Let us see how we can explain it. पहले एक बार ये एयर वाला डिस्कस कर लेते हैं. देखो यहाँ पर इफ यू सी, जो एयर यहाँ से ऊपर होगी वो ऑब्वियसली कूलर होगी, वहां पर उतनी हीट नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन एयर जस्ट अबव दिस फायर विल बी हॉटर, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा डेंसिटी of the hot air will be lesser as compared to the density of the colder air, ठीक है? उसकी वजह से क्या होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम हो जाएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम हो जाएगा. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने की वजह से, डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से क्या होगा, देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन. अब रिफ्रैक्शन हमको फ्लिकरिंग के वे में या टर्बुलेंस के वे में क्यों दिख रहा है, क्योंकि एयर इज इन द मोशन, राइट? तो जहां जहां एयर जा रही है उसी के अकॉर्डिंग हमको चीजें थोड़ी सी मूव होती हुई, वेवर्ड होती हुई दिखाई देंगी. ऐसे मूवीज में भी, या कभी आप डेजर्टेड एरियाज में भी देखेंगे तो दूर की चीजें थोड़ा सा फ्लिकर दिखाई देती है, हाईवेज पर भी ऐसा होता है, राइट? सो दिस वाज अबाउट इट. और इसी टाइप का सेम फिनोमिना based on the different densities of the atmospheric layers, right, of the air, उसी की वजह से हमको जो स्टार्स है उनकी फ्लिकरिंग दिखाई देती है. we'll also understand कि सन भी एक स्टार है, प्लैनेट्स भी हमसे काफी दूर है, लेकिन उनकी फ्लिकरिंग हमको क्यों नहीं दिखाई देती, वेयर एज स्टार्स की हमको दिखाई देती है. दे आर ऑल्सो लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट, सन इज ऑल्सो लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट, राइट? Let's see. So now we have twinkling of stars. Twinkling of stars is due to atmospheric refraction of starlight. The starlight on entering the Earth's atmosphere undergo refraction continuously before it reaches the Earth. क्योंकि ऐसा क्यों होता है?
because starlight अर्थ के एंटर होने से पहले इट इज कमिंग फ्रॉम वैक्यूम, राइट? तो वैक्यूम में तो वहां पे कोई एयर डेंसिटी का डिफरेंस, डेंसिटी डिफरेंस नहीं होगा, तो उससे पहले उसके पाथ में कोई भी हमको चेंज देखने को नहीं मिलेगा. इट विल बी ट्रैवलिंग इन दी स्ट्रेट लाइन, right? The atmospheric refraction occurs in a medium of gradually changing refractive index of the Earth's atmosphere. Since the atmosphere bends starlight towards the normal, the apparent position of the star is slightly different from its actual position. Now see here, if we have this is the Earth's surface and this is the observer, right? Now यहाँ पे different different densities की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, करेक्ट? अब डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है तो डिफरेंट डिफरेंट सर्फेसिस का काम करेंगे. दिस शुड बी द स्ट्रेट पाथ ऑफ द स्टार. सो इसको ऐसे ट्रैवल करना चाहिए था, राइट? स्ट्रेट पाथ. बट अगर आप यहां पर देखोगे, इफ यू सी हियर, दिस इज द स्टार एंड द रे ऑफ लाइट इज कमिंग. नाउ फर्स्ट इंटरेक्शन. अब यहां पर क्या होगा? सिंस वैक्यूम से अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ रहा है तो इट इज बिकम मोर डेंसर. डेंसर है तो अब ये नॉर्मल के थोड़ा सा पास में, इट विल मूव, द रे विल मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल. Then coming to the second layer of the atmosphere, which is more denser, right? जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से बाहर की तरफ जाते हैं, द डेंसिटी ऑफ द एयर डिक्रीजेस, राइट? और इसका उल्टा ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम बाहर से मीन्स फ्रॉम वैक्यूम टू द अर्थ एटमॉस्फेयर हम एंटर करते हैं एंड रीचिंग टूवर्ड्स द अर्थ क्रस्ट, एयर बिकम्स मोर डेंसर. तो नीचे आते आते हमारी डेंसिटी, our density is increasing. अब डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इंक्रीज हो रहा है, राइट? सिमिलरली अब जो यहाँ पर रे आएगी वो आप क्या देखोगे, वो और ज्यादा बेंट होगी, डेंसिटी और इंक्रीज हो गई है. सो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर, इफ यू सी द स्ट्रेट पाथ, दिस इज द apparent position of the star. Clear? Okay. दैट्स वाई जो स्टार हमको एक्चुअल में दिख रहा है, दैट इज नॉट इट्स एक्चुअल पोजीशन. इट इज एट अ लिटिल different position from its actual position, and that position is known as apparent position. So according to the observer, if we see, this is our actual position, right? This is the star, but due to refraction, atmospheric refraction, we will see star somewhere here. Okay, so now we understood about the apparent position of the star is slightly different from its actual position. Now, the star appears slightly higher above the actual position. This is important. They can ask slightly above or slightly below than its actual position when viewed near the horizon. Further, its apparent position of the star is not stationary. It keeps on changing slightly since the physical condition of the Earth's atmosphere is also not stationary. Air is also moving. The physical condition, density is also according to the night and day, according to the temperature also. These things changing. So because of that, ये नहीं कि जो star आपको आज वहां दिखा तो कल भी वहीं पर दिखेगा. It can be at the a little different position. As was the case in the previous paragraph, since the stars are very distant, very, very far, they are approximately point size. They are approximately point size source of the light. As the path of rays of light coming from the star goes on varying slightly, the apparent position of the star fluctuates. The amount of light straight entering eye flickers. The stars sometimes appear brighter and sometimes fainter, which is known as the twinkling effect. Now let us understand. Before that, I want to show you some few images for the better understanding of the previous topics. Now if you see, this is the star before entering the Earth's atmosphere. As I told you, it is completely vacuum, so there won't be any bending. It will be traveling in the straight line path. But if you see Earth's atmosphere, then we know that the air near the Earth's crust will be more denser, and air in the outside part or the outermost part of the atmosphere will be the least dense, right?
That means as we are moving towards the Earth's crust, our density is increasing, or we can say our refractive index is increasing. Because of which, what will happen? The light will start moving towards the normal, right? And we'll see the bending of light. If we see the bending of light, and if we, according to the observer, the star will appear somewhere here, right? Somewhere above the original position. Clear? Now coming to the point size of these stars, right? From the stars, it's not only one ray coming, many rays are coming, correct? Because of its, what we say, um, higher distance, right? A very long, it is coming from very long distances. So some rays will be coming towards the observer's eye, but some rays might be deflected and not entering the observer's eye, right? Again, because of the atmospheric refraction, you will see the light coming from the stars. Some of its rays will be entering the observer's eye and some of the rays will be missed. Correct? Now tell me, if you have a torch, right? Let's say we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 LEDs in this particular torch. If it is quite near to you, it won't make a difference if one or two LEDs or three LEDs are missed, right? If they are not working, right? You will feel that yes, we have same amount of light if it is very near to you. But if it is very much far to you, if one, two, three, four, five LEDs are, let's say, by default they are not working, so you will feel some dimness in the light. Correct? So now mix these two concepts. As we say, atmosphere, the atmospheric air is not constant. So the number of light entering in your eyes will not be constant. Sometimes it will be more light entering in your eyes. Sometimes it will be less rays of light of from the particular star will be less. So that's why sometimes you see the star more brighter and sometimes you see the star more lighter. That's caused the flickering of the star. Clear? Okay. Sometimes maybe only 2 to 3 rays of light are coming, so it will be very dim. Sometimes maximum part of the rays are entering, so it will be very brighter star. Sometimes medium, so there will be that flickering. Sometimes more light is coming in the observer's eye. Sometimes less rays of light are coming in the observer eye, causing the flickering of the star, right? Or what we say, twinkling of the star. But now, as I told you, the distance. Planets are, as compared to stars, quite nearer to us, right? We are not saying they are just neighbors, but actually, if we compare the distance from a star to the Earth and the star to a planet, it is very less if we compare the distance. So again, as I told you, if something is quite nearer to us and some lights of it is missed, it won't be showing some major deflection or major kind of flickering to us. That's why we say that planet do not flicker. See, this is the maximum light. If you see these two are not working, so since this torch is quite nearer to you, it is not making much of the difference, right? Same with the planets, correct? It is just the reflection of the sun's light, right? Since they are quite nearer to us, right? So some points might be missed or some points might be there, but maximum amount of light is entering. There won't be any flickering. There won't be any twinkling because they are quite nearer to us. So why don't the planets twinkle? The planets are much closer to the Earth and are thus seen as extended source. If we consider a planet as a collection of number of point-sized sources of light, like those smaller LEDs of the torch, the total variations of the amount of light entering in our eye for all the individual point size will be
average out to be 0. If one or two are not working, it doesn't matter, thereby nullifying the twinkling effect. I hope you understood. Now coming to the advanced sunrise and delayed sunset. The sun is visible to us about 2 minutes before the actual sunrise and 2 minutes after the actual sunset because of the atmospheric refraction. By actual sunrise, we mean the actual crossing of horizon by the sun. Okay? Actual sunrise means actually when it is crossing the horizon of the sun for the observer. Shows the actual and apparent positions of the sun with respect to the horizon. The time difference between the actual sunset and the apparent sunrise is about 2 minutes. The apparent flattening of the sun disk and sunrise is also due to the same phenomena. We'll come to that apparent flattening, but let us understand the apparent position of the sun. Okay? Again, if you see here, this is for the sunrise. Let us understand the sunrise first. Okay? This is our horizon, right? Now again, because of the atmospheric refraction, this is the real position, correct? But again, due to bending of the light, the sun actually appears us to a little above, like same as the stars. अपनी पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखता है ना स्टार. Similarly with the sun, जो उसकी रियल पोजीशन है, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यहाँ पर उसकी पोजीशन थोड़ी सी ऊपर दिखाई देती है, जिसकी वजह से कितना डिफरेंस आ जाता है, 2 मिनट्स का डिफरेंस आ जाता है. अगर सन यहाँ पर है तो हमको लगेगा वो इधर है, मतलब 2 मिनट पहले ही होराइजन, इफ वी आर टेकिंग अ होराइजन, ठीक है, तो वहां से 2 मिनट पहले ही हमको दिख जाएगा अरे सन तो आ गया, लेकिन अभी वो होराइजन, एक्चुअल में वो होराइजन के नीचे है. ठीक है. Coming to the sunset, same thing will happen. This is the real position. हमने क्या कहा, अपनी रियल पोजीशन से apparent पोजीशन थोड़ी ऊपर रहेगी. तो सेम देखो, रियल पोजीशन से apparent पोजीशन थोड़ी ऊपर है, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन लाइट की बेंडिंग होगी, apparent पोजीशन रियल पोजीशन से थोड़ी ऊपर दिखाई देगी. तो सनसेट हो चुका होगा लेकिन हमको 2 मिनट बाद दिखाई देगा. क्लियर हो गया. जिसकी वजह से इफ यू सी हमको 4 मिनट्स एक्स्ट्रा सनलाइट मिल रही है. ओके, सो कमिंग टू apparent flattening of the sun disk at sunset and sunrise is due to atmospheric refraction that we have studied. Now what is happening, the density of the medium decreases with altitude that we have discussed. जैसे जैसे altitude बढ़ता जाएगा, height बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे density of the air decrease होती जाएगी. So the rays coming from the top and the bottom are refracted at the different angles. Means जो सन के ऊपर वाला पार्ट है वहां से एंगल दूसरा है और सन के जो नीचे वाला पार्ट है वहां से एंगल दूसरा आ रहा है, राइट. This causes the apparent flattening of the sun at the same time of the sunrise and the sunset. But the rays from the side of the sun are generally refracted by the same amount. जो हम साइड्स देखते हैं, ठीक है, ऐसे थोड़ी सा कि रेडियस भी बढ़ता है, छोटा सन का साइज तो वही रहता है. जो हम साइड्स देखते हैं वो स्ट्रेट पाथ में, मतलब उसमें इतना खास रिफ्रैक्शन हमको देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से सन हमको अभी भी सर्कुलर शेप में ही दिखाई देता है, बट लिटिल फ्लैटेंड साइज, बिकॉज जो हायर पार्ट है वहां पर डेंसिटी कम है और जो लोअर पार्ट है वहां पर डेंसिटी ज्यादा, कॉजिंग द फ्लैटनिंग ऑफ द सन. इफ यू कैन सी हियर, देखो धीरे धीरे sun is getting flattened, right? यहाँ पर it is getting flattened. Now coming to the next topic, that is scattering of light. The interplay of light with objects around us give rise to these several spectacular phenomena in nature. The blue color of the sky, the color of water in deep sea, the reddening of the sun at sunrise and sunset are some of the wonderful phenomena we are familiar with. In previous classes, now they can ask, define the phenomena or name the phenomena related to scattering of light. So we can say the blue color of the sky, color of the water in deep sea, reddening of the sun at sunrise and sunset,
are some of the wonderful phenomena of the scattering of light. ठीक है, you have learnt about the scattering of light by colloidal particles in the chemistry topic. The path of the beam light passing through the true solution is not visible. However, its path become visible through a colloidal solution where the size of the particles are relatively larger. So वही chemical concept हम यहाँ पर use करेंगे and वहीं पर हमने एक word, एक phenomena समझा था, that is Tyndall effect. उसको भी यहाँ पर एक बार दोबारा से डिस्कस करेंगे. Now these are some pictures regarding Tyndall effect. If you see, जैसे हमने केमिस्ट्री में समझा था, this is the light source and true solution. True solution की खास बात क्या होती है कि true solution में particle size बहुत छोटे होते हैं. In true solutions, particle size are very small. So because of that, what will happen? यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी. भी समझेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है. यहाँ पर कोलोइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज बहुत बड़े होते हैं, तो लाइट जैसे ही इनसे टकराएगी तो ये इधर उधर स्कैटर होना शुरू कर देगी. ठीक है, यहाँ पे बहुत छोटे से तो लाइट टकरा ही नहीं पाएगी, तो स्कैटर कैसे होगी, राइट. अब यहाँ पर भी देखो, पार्टिकल्स यहाँ पर बहुत छोटे छोटे हैं, राइट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पाथ ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल. लेकिन जैसे जैसे हम पार्टिकल साइज मींस सॉल्यूशन को कोलॉइड करते जाएंगे, वहां पर पार्टिकल साइज इंक्रीज होते जाएंगे और लाइट क्या कर रही है, उतना ही ज्यादा स्कैटर कर रही है, राइट. जैसे जैसे पार्टिकल डेंसर होता जा रहा है, कोलॉइडल होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारी स्कैटरिंग भी बढ़ती जा रही है. क्लियर. देखो, ट्रू सॉल्यूशन में बीम ऑफ लाइट विजिबल नहीं है. ओके, सो दिस वाज द केमिस्ट्री. ठीक है, जैसे अगर हमारे पास एक पार्टिकल है, जो भी कोई भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एयर में, बहुत सारे स्मोक पार्टिकल्स होते हैं. अब यहाँ पे हमारी आई लाइट सोर्स, तो लाइट सोर्स इससे कोलाइड करेगी, इससे टकराएगी और फिर स्कैटर हो जाएगी इन डिफरेंट डायरेक्शंस. करेक्ट. दैट इज नोन एज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. स्कैटर मतलब क्या होता है, फैल जाना. तो वहां पर वो इसको टकराई, इससे कोलाइड हुई और फैल गई, स्कैटर हो गई. ओके, नाउ दिस इज द टिंडल इफेक्ट शोन इन द कैनपी. मींस जो लंबे लंबे ट्रीज होते हैं वहां से जो, जैसे हिंदी में हम बोल देते हैं, जो धूप है वो छन कर आ रही है, राइट. सो यहाँ पे वी आर सीइंग द टिंडल इफेक्ट इन द फॉरेस्ट. ओके, हमें बीम ऑफ लाइट विजिबल हो रही है बिकॉज इन फॉरेस्ट वी हैव दोज वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना, सुबह सुबह. So because of that, because of those particles, यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है. The Earth's atmosphere is a heterogeneous mixture that we know of minute particles. These particles include smoke, tiny water droplets, suspend particles of dust, and molecules of the air. Right? When beam of light strikes such fine particles, the path of beam become विजिबल. ठीक है, इतने पार्टिकल्स, इतने बड़े पार्टिकल से जब लाइट स्ट्राइक करती है तो क्या होगा, इट विल स्कैटर, जिसकी वजह से बीम ऑफ लाइट विजिबल होगा. द लाइट रीचेस अस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली बाय दीज पार्टिकल्स. The phenomena of scattering of light by the colloidal particle give rise to the Tyndall effect. This phenomena is seen when fine beam of sunlight enters a smoke-filled room with small hole. Thus, the scattering of light makes the particle visible. इसका example, if you see, घर के खिड़की से या दरवाजा थोड़ा सा खुला रह जाता है in a very sunny day, so you are able to see the beam of light. Also, उस beam of light की वजह से dust particles भी हमको visible होते हैं, right? जिनसे कभी कभी छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं, अपने हाथ इधर उधर करते हैं, and this also deflects here and there. Correct? So these particles are visible due to the Tyndall effect. क्यों? क्योंकि particles इतने बड़े हैं कि यहाँ पर light आ रही है और scatter कर रही है, जिसकी वजह से जब लाइट इनसे टकरा रही है तो क्या हो रहा है, वहां पर दे आर ऑल्सो नाउ विजिबल. Clear? Tyndall effect can also be observed when sunlight passes through a canopy of a dense forest. Here, tiny water droplets and the mist in the mist scatter the light. Now, the color of scattered light depends upon the size of the scattered particle. Important है ये. Okay, very fine particles scatter mainly blue light, while particles of larger size scatter of longer wavelengths. ठीक है,
means very fine particles scatter mainly blue light, while the particles of larger size scatter the light of longer wavelength. अब इसको हम समझते हैं. If we come back to our VIBGYOR, VIBGYOR, right? As we are moving from violet to red, we know that our wavelength is increasing. है ना? That means red has the longer wavelength, whereas blue has the shorter wavelength. Now in the sky, if we see in the sky, the particles will be, because the pollution is on the lower end. On the higher sky, the particles will be very small, right? So these smaller particles will be scattering the blue light. That is why our sky is majorly in the blue color. Okay. So blue light is scattered in all the directions by the tiny molecules present in the air of the Earth's atmosphere. ठीक है? अब blue light scattered more than other color because it is of the very shorter wavelength. Lesser the wavelength, more is the scattering because of its smaller waves. This is why we see a blue sky most of the time. Closer to the horizon, as we go a flatter side, the distance increases. That is why the fading of the blue color, if you see, if you observe, the blue color is fading and more of the white color or light blue color is getting visible, right? अब आप कहोगे वायलेट और इंडिगो क्यों नहीं दिखता, क्योंकि इनकी और भी शॉर्टर वेवलेंथ है, तो ये इतने स्कैटर हो जाते हैं कि पूरी तरीके से डिस्पर्स हो जाते हैं. इतनी ज्यादा मतलब शॉर्टर वेवलेंथ है, शॉर्टर वेवलेंथ लेसर एनर्जी, पूरे के पूरे डिस्पर्स हो गए, पूरे के पूरे स्कैटर हो गए और ऑब्जर्वर की आई तक पहुंच ही नहीं पा रहे. ब्लू इज द कलर जो स्कैटर भी होता है और ऑब्जर्वर की आई तक रीच भी कर पाता है. करेक्ट? Now see, if the size of the scattering particle is large enough, then the scattering light may even appear white, as I told you. नीचे आते आते towards the horizon, distance भी बढ़ जाता है, particles का size भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा? That blue started converting into the whitish color. Okay. So why is the color of clear sky blue? Now, if you see, the molecules of air and other fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of the visible light. This is important कि जो atmosphere में air में जो molecules present हैं, ठीक है, in the atmosphere, उनका जो size है वो wavelength of the visible light से छोटा है, right? These are more effective in scattering the light of the shorter wavelengths. ठीक है, अगर हम पूरी वेवलेंथ को विजिबल लाइट रीजन को, विजिबल लाइट रीजन में कौन से होते हैं? VIBGYOR प्रेजेंट होता है. तो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं जो बड़ी वेवलेंथ होंगी वो तो इसको क्रॉस करके निकल जाएंगी, जैसे हमने ट्रू सॉल्यूशन में देखा था कि बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं तो लाइट स्कैटर ही नहीं कर पाती. करेक्ट? लाइट कोलाइड ही नहीं करेगी. तो रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर जो है वो यहाँ पर स्कैटर हो ही नहीं पाएंगे. अगर होंगे भी तो बहुत नेग्लिजिबल होंगे, इतना महसूस भी नहीं देंगे. राइट? सो इसकी वजह से जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट होगी, लेट्स से जो ब्लू कलर की होगी, वो इन छोटे पार्टिकल से कोलाइड करेगी, स्ट्राइक करेगी, जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम जो मिलता है ब्लू कलर मिलता है. द रीजन shorter wavelengths at the blue end then light of longer wavelengths at the red end. ब्लू और रेड जहां पर लॉन्गर वेवलेंथ्स चाहिए होंगी जो होराइजन पे आता है, तो दीज आर मोर इफेक्टिव इन द स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ एट द ब्लू एंड. ठीक है, मतलब वो रेड एंड को नहीं स्कैटर कर पाएंगे, वो ब्लू एंड मतलब VIB वाले रीजन को ज्यादा अच्छे से स्कैटर कर पाएंगे. मैंने आपको बताया कि जो V और I है वो बहुत छोटी वेवलेंथ हो गई. ठीक है, तो वो उनमें एनर्जी भी कम है. अब वो स्कैटर होके इतनी एनर्जी नहीं है कि ऑब्जर्वर की डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस कवर कर सके कि ऑब्जर्वर की आईज तक रीच कर सके. इट इज द ब्लू कलर जो स्कैटर भी होता है और समहाउ ऑब्जर्वर की आईज तक रीच भी कर पाता है. Now the red color has the wavelength about 1.8 times greater than the blue light. Approximately we can say double, right? Thus, when sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in air scatter the blue color, the shorter wavelength.
more strongly as compared to the red one. The scattered blue light enters our eyes if the earth had no atmosphere. अगर earth के पास atmosphere नहीं होता, like we see on the moon does not have any atmosphere. So अगर कोई इंसान moon पर खड़ा है तो उसको sky बिल्कुल black दिखाई देगा because there won't be any scattering of the light. ठीक है? There would not have been any scattering and the sky would appear dark. The sky appears dark to the passengers flying at very high altitude क्योंकि वहां पे scattering बिल्कुल least होगी या फिर नहीं होगी. As the scattering is not prominent at such high heights जहां particles बहुत कम हैं या है ही नहीं. You might have observed that danger signals light are red in color. क्यों? ताकि वो दूर से दिख सके. दूर से क्यों दिख सके? क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है. वेवलेंथ ज्यादा है तो क्या होगा? वो दूर तक ट्रेवल कर पाएगा. The red is least scattered, right? Or by fog or smoke, therefore it can be seen in the same color at the distance. ऐसे नहीं कि कुछ और दिखने लग जाएगा. जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतना कम स्केटरिंग होगा. ठीक है? सो रेड कलर इसीलिए डेंजर साइंस, इंपॉर्टेंट साइंस, सिग्नल्स के लिए हम जनरली रेड लाइट को यूज करते हैं ताकि स्कैटरिंग ना हो. जैसा हम दिखाना चाहें बिल्कुल वैसा ही दिखे. Now I hope this was the end of this chapter. Rest two topics are not covered in this chapter, right? So we'll not be doing that. I hope you understood. If you have any doubt, you are welcome. You can ask the question in the comment section. I will definitely answer all your questions. Also, I've attached my Telegram group and channel there. If you wanted to join and ask the question personally, you're welcome to ask the questions. Okay? Have a nice day. Take care, children.